बहुत कुछ होने लगा। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Very good evening to all. We at Franchise India welcomes you all to Bharat Franchise Show. It's India's biggest multi-franchise show ever, where our aim is to digitally present some of the hand-picked opportunities for you all. We do not endorse any brand. This is a presentation of different business opportunities so that you can take a right decision. With this introduction, I also welcome brand participants who have joined us today to present their business model with us. I also welcome and invite management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am, along with our Senior Vice President, Mr. Sanjay Bhatt. During this webinar, we will try to cover all the aspects of business opportunities we will be showcasing. We also encourage all those who have joined to ask questions here and on our hotline number, which is 9717683838. I would also request our Senior Vice President, Mr. Sanjay Bhatt, to please take it forward and share a few words with us. Thank you, Sanjay sir, for joining in. Over to you, sir. Yeah, thank you, Stanley. Thank you very much for organizing another edition of this Bharat Franchise Show, which is our new initiative, which we started on 1st of June. Today, it's been now 26 days we've been doing these virtual events. Idea is to take this opportunity to every city, every day. This Bharat Franchise Show, which is 100 days, 100 shows and 100 cities. The concept is very clear, wherein we are in that mission, wherein we go to every city in India, and we bring hand-picked opportunities for our investor community, because this was our initiative earlier, before COVID time, before lockdown time, that every city we were organizing the events which were physical events, with this thought process that every city we go and local investors, we will give them some hand-picked opportunity in that city, and so that everyone would look forward to invest in a right brand. But since now it's been a year or so, we are digitally doing all these events. We started in the month of March to organize a physical event, which was there in Hyderabad, which was a very, very high successful event, wherein we have more than 4,500 investors in just 2 days. They have attended our event, and more than 120 companies have participated also in that show. So we had all the plans there to organize all physical events every month, but with this lockdown and pandemic, so we have to postpone all these events, and we came back to virtual events, digital events, so that keep our community busy, so that to keep our investor community with the handy franchise opportunities for them. So Franchise India last 24 years,
we are dedicated into this business wherein we help investors one side and brands other side, wherein they want to expand in cities, multiple cities in India. It can be tier 2, tier 3, tier 1 cities, and we take them along with us and find out right opportunities for them, right partners for them in each city. So Franchise India, while we are helping you in terms of with right opportunities, but at the same time, we know this is a process. This is not easy and one step wherein you can go and invest directly in any of the brand. There is a process, and we feel that you should always have one good consultant in between who can help, who can handhold, who can guide properly which brand to invest, because this is a lot of things need to be in consider wherein before investing in any of the brand. So that's how Franchise India today have 87 cities today, very strong network. And we have top class franchise consultants with us in all the cities, in 87 top cities today. And what they do is they give you free consulting of half an hour slot, and they help you. They understand your opportunity. They understand your requirement. They understand what is your pocket, what is your idea to go for this, and why you want to take franchise. So they will understand this process and then handhold properly and what is good for you, because business cannot be seen next 2 month perspective. Business has to be some 10 years, 12 years, 15 years, 20 years. And which business is suitable for your market, which business will give you longevity, good returns also in that sense. And what is your background? That's very, very important, because it has to be very much relevant. If you do not have experience of any business, so it may give you losses also tomorrow. At the same time, Franchise India is helping you, as I said, in complete handholding and structuring the deal for you, which is suitable for your market and suitable for your budget as well. So with that note, since today it's a North India show which we are organizing today, so from North, we have with us our consultants who are there to help you after this webinar. They will one-on-one discuss with you, understand your opportunity, and the current opportunities which we are bringing in and inviting today will give you understanding about these brands also, and would take you one-on-one discussion with the brand, so that you can choose right and you can get good returns out of that brand. So with that note, I'm pleased to welcome and invite my today's guests. Before I invite our title sponsor, we are very thankful to Hyper Exchange as a brand who have sponsored this show, who have given us a lot of support in this show, and last 26 days they are with us. Before we invite them formally, so I would like to introduce my partners, business partners who are in North India today, would help you further. I have got Mr. Gagan Atreja with me, and I would one by one welcome them and invite them to have a few lines from their side also, so that all my audience, all my investors would know them in your city who is there to going to help you. So what to you, Gaganji, if you can have one line from your side also. Yeah, good evening, sir. Good evening. And thank you all for being here in this event, which is being organized by Franchise India, in which basically we are bringing all the opportunities to your doorstep, as you can choose from there those opportunities, and we are there to handhold you. And as Sanjay sir told, that Mr. Gaurav Arya, who is our chairman, and Sonia ma'am, who is MD of Franchise India, they are bringing this good platform to all of you. And we are having all kind of opportunities. Either it is area developer, either it is master franchise, either unit franchise is there. According to your budget, according to your investment, we are bringing those opportunities on your doorstep, and it is very good initiative, which is fruitful for all of us who can invest in any of project. And thank you, Sanjay sir. So please take it forward. Thank you very much. And we have with us Mr. Rajesh Rattan. Mr. Rajesh is coming from a lot of experience from the franchising background, and he has helped hundreds of investors till now. He is based in Chandigarh. He would be in touch with you also further. So I would like to welcome and invite Rajeshji also to have few lines from you. Thank you, Sanjay, for inviting me here, and I welcome all the investors and brands. Because of my health issue, I won't be able to talk much because I'm having cough. So I welcome all the brands and investors. I'll be more than happy to connect and reconnect at any point of time with all my investors. Thank you.
Thank you for joining in. And we have our next guest, which is next panelist, Ms. Preeti. She is also from in Gurgaon and she'll also handhold you. If you can unmute and one line from your side also. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस शो। सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंचाइजी इंडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक अपॉर्चुनिटीज़ का। जो लोग बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, वो हमारे पास है सब कुछ। आप वी आर हियर फॉर यू। कंसल्टेंट्स हैं हम लोग, आपको गाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बजट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संजय सर। Thank you very much. So we have got with us Mr. Rahul also. He is in Ghaziabad and he can also be, helping you throughout. Yes, Rahul, over to you. Yeah, good evening, everyone. I thank all the investors to be here who joined today for this session, and also welcome to the brands. Today it will be a very great session. We will be having discussions with them, and also find at the last any queries you can reach out to us. We are most welcome to help you in this. Thank you. Sandeep ji, can you unmute if it is okay with you? I can see you there, so you can also unmute and have one line from you also, or if there is any technical error, and you can let me know. Okay. Hi, yeah, very good evening, everyone. Yeah. It has been periods of downs and good to connect with you all as the economy is warming up, as well as the sentiments forming up. Economy will for sure boom up further. Just have one note to share. We are getting a lot of queries from the people who are into service and they want to get into the new path. But there is no magic bullet or the time when we can switch over. But yes, we should not postpone the decision because changing over will require a lot of time, commitment, and discipline. It's better to work today than tomorrow so that we get good amount of time for due diligence and planning. Thanks very much for attending the event. Over to the panel. Thank you, Sandeep ji. Thank you very much. Before we invite our first panel brand, the sponsor, I would really look forward to all the investors, welcoming them again. And one message from our chairman, Mr. Gaurav Maria, who has given us this opportunity and this platform. Last 24 years, he is servicing the industry, servicing the nation with the right kind of opportunities every day. So he has given us this platform wherein digitally we can interact with all the investors in all the cities. Thank you very much in joining in, all the investors and all the brand owners who have joined us. Thank you very much to you also. So our chairman has given us a message that he was wishing all the success and all the good health to all the investors and brands also. Plus, he is also suggesting every time that you should not take any decision in a rush. You should always give time, evaluate right, and get in touch with our consultants, take their help, and they will definitely handhold further and would give a right decision and right suggestion to you. With that note, thank you very much once again. And Mr. Roy, thank you very much for joining in today. We formally welcome you and thanking you also from Franchise India platform side that the support which you have given to us. And last 26 days now, you are there with us, supporting this event. Every city, you've been there with us. Thank you very much for your time as well. And over to you now. Show is yours. So please, you can take us through with your opportunity. Thank you. Thanks, Sanjay. Thanks, Franchiseindia team. Hello and welcome to today's show. I cordially welcome all the investors out there. Right. I am Shotanik. I'm the co-founder of the brand Hyper Exchange. Before we go into the presentation, I just love to share a quick video with you guys.
Thank you. I'll just share my presentation with you. Yes. So as I just mentioned, Hyper Exchange is India's fastest growing brand for refurbished electronics, right? And while the pandemic hit has really been has probably taken businesses off, has probably been one of the greatest catastrophic issues in the human generation. For HyperExchange, this pandemic proved to be a super growth story for us because of the very fact HyperExchange is into selling of premium refurbished devices at affordable price, right? And that is what post-pandemic and the pandemic situation, that is what people are looking forward to. Today, with work from home, with study from home, people are looking forward for more devices. That has been a great exchange and increase in terms of demand. While that is true, at the same time, there has been job losses. There has been a haircuts in terms of their salaries. So people are now looking forward for more affordable options, and that is exactly what Hyper Exchange addresses and serves the market with. So interesting story for us. 2016 was the year we started. It was the same year we were incubated by IIM Calcutta. IIM Calcutta is the one of the most premier institution in this country, and since then we have scaled exponentially. 2017 we were invested and incubated by Microsoft. 2020, which was the year of the pandemic, right? When businesses were shutting down, retails were off. That was the same year the Retailers Association of India honored us with the Retail Startup Award. So while that significantly marked to be a great feather over the crown, 2021, that is this year, we went even ahead, and Forbes magazine in the 30 under 30 edition named us not just as a Forbes 30 under 30 startup, not just in the Indian edition, but across the Asian edition as well. And if you guys know, like Forbes chooses the best of the best brands out there, right? And in every field. So this is just not for entrepreneurship. This is just not for business, but they choose names in terms of entertainment. They choose name in terms of sports. So in terms of business, this is the year HyperExchange made it to Forbes 30 under 30, and that has been a very proud and significant moment for us. Right. So as I just mentioned, while the fact like we sell refurbished devices is partially true, we also sell unboxed and new devices, right? And if you look at the top of the slide, the products we sell are mobile phones, and definitely while mobile phones remains to be the largest category of the devices we sell, we also are into laptops, televisions, and accessories, right? And when we started in the refurbished segment, we realized the while it's $100 billion opportunity, 95% of this market was gray. Here I'm talking about an unstructured market which was looking forward to boom, but 95% of this market was gray. And while that laid a huge opportunity, we had to, realize what was really wrong. That is why the market is still with such a huge opportunity, it's still 95% gray. We realized there were two things. One was trust, and there was transparency. So in terms of transparency, I'll come with the next slide. How we are solving the transparency issue, right? In terms of trust, we realized from day zero, while customers are looking forward to buy, it was a no-brainer, right? If you're selling an say iPhone 12 Pro Max, which costs you 1,20,000, right? At say 60,000 or 70,000, people are looking forward to buy it, right? It's a no-brainer. But when but what is the reason that is restricting them to buy it? That was the fact of trust. They are they have a thought process, what if I buy it and something goes wrong? That was the clear message that had to be addressed. Hyper Exchange was in industry first to give a 12 months warranty, doorstep warranty. If you know the brands which sell refurbished, including Flipkart,
there's a maximum of 3 to 6 months warranty. So even Flipkart has a 6 months warranty for the refurbished products. HyperExchange is a brand which gives a 12 months doorstep warranty on every product. So that clearly states, as a brand, we trust the products we sell. So basically, when it goes out to a customer, we say, hey, you know what? If you go out and buy a new product today, you would not even ask what is the warranty period, because it's a 12 months valid warranty. Similarly, for a refurbished product, in terms from HyperExchange, there's a 12 months doorstep warranty. And to top this up, we have a 7-day worry-free return. In case, say, you buy it and change your mind, probably I'll not go for this device. I'm probably looking for some other device, right? We have a 7-day worry-free return, right? And at the same time, there's a 9 months assured buyback. Every 3 months, there's a new device being launched in the market. We always look forward to move to the next generation of devices, move to the next generation of technology. And while that is true, we look forward to also dispose of the current device. I mean, most of us are surely having, say, 3 to 4 handsets at home, which we are not utilizing, but we do not know where to dispose of. We do not want to go to the shady local places, say the Gaffa market in Delhi, or say the Khidipur market in Calcutta, or say the in Lamington Road, and sell this off. So we do not know how to dispose this off. Yet we are looking forward to move to the next generation of technology. That is where HyperExchange also comes in and gives a 9 months assured buyback, right? And to top this all, for every product we sell, we plant a tree. We are a climate positive brand. That's how importantly we focus in terms of branding, to create a trust in terms of for the customers out there, right? And the channels which sell through, it's both online and offline, right? Online we sell through our own HX card, our own channel, and as well as the third party channels, third party marketplace channels, including Flipkart, Amazon, eBay, Flickr, name them, we are there. We are top three in each and every of this marketplace, either top one or top two, or top three, right? We are there in every of these marketplaces. And offline, we sell through our own distribution network. We have exclusive tie-ups with companies like Ingram, which is a Fortune 500 company, which is the largest distributor of mobile phones in this country. For refurbished, we have an exclusive tie-up with them. And here I am in front of you guys. For the last 26 days, we are talking to several investors. We have met over 100 investors in this last 26 days. We are now expanding our sales channel, not just through distribution, but as well as franchisees. Coming to the next slide, as I just mentioned to you, while COVID was a tragic incident in terms of humankind, but COVID proved to be a hyper growth hyper growth like a hyper growth shot for us, just because of the very fact, here we are speaking about people looking for devices and looking for affordable devices. Yet while say a family just needed one laptop at home, today with study from home and work from home, people need at least 4 laptops at home, right? So that proved really to be a great push for us, right? And currently, while we were growing at 100% year on year before COVID, since COVID we are growing at 100% month on month. We have 100 crore plus revenue run rate today, selling 10,000 plus products every month. That's where we are standing with the numbers today. These are solid numbers, and this is where we realized, after 5 years of extensive creation of distribution channels, both are online and offline. I'll come to that part as well, where HyperExchange is a COVID-proof model. What I mean by COVID-proof model is, while you can understand, like, the demand is just going to grow, and on the other hand, right, even if tomorrow, say that there's the third wave, there's fourth wave, how many so ever waves there are, right? And just some time back, Sandeep was probably mentioning, right, there's a lockdown in this place again today, right? So retail will probably go over lockdowns, or say there will be just 2 or 3 hours of opening hours, operational hours. Yet you have to choose a model which allows you to still get your earnings, even if the offline is closed.
So HyperExchange has an omni-channel approach. Omni-channel approach as in I give you the opportunity to just not sell offline but online as well. That's a extremely successful model we have created, which allows you to sit back at home, and even if your store is closed tomorrow, right, I'll give you the opportunity not just get your margins earning from your local offline territory, but also online pan India. So probably you might be sitting in North India today. There might be somewhere you'll still be delivering an order in South India and still earning your margins out there sitting at your home. Hyper Exchange is a COVID proof model. We have created a strong demand both online and offline. And today, while offline sees a offline seems to be at a place where people are really looking for options, where they are looking forward for say low risk options. They're looking forward for options that might be the next generation model, which COVID seems to have taken a troll upon, right? Hyper Exchange gives you that opportunity today. I'll be happy to discuss more about our minimum guarantee offers, etc., as we move forward. And I just mentioned to you, right, while trust was one issue, another issue was transparency. So basically, we realized in the entire supply chain, in the entire market, and today, similarly for warranty, the issue was not about no one is looking forward to give a warranty to their customer. The issue was people did not know what is the product they are selling, because of the very fact people did not know in terms of when someone is procuring a device, what is the condition of the device he or she is procuring. So this was something that was missing from the market. This was a manual process. You probably go to someone, just take a phone and say, you guys, many of you have probably already experienced this. You go out and try to sell your device, someone would take it in their hand and say 5,000 देंगे, but 5,000 क्यों, 4,500 क्यों नहीं, 5,200 क्यों नहीं, because of the very fact it is based on an assumption. Like probably if I give this person 5,000, I can still get say 500 rupees out of it selling this device. And this is something we call hope. We cannot create a business, we cannot create a $1 billion business based on hope. There has to be facts, there has to be numbers, there has to be proper data. While this was true, we went out to the market to search if there's probably any device or product that could allow us to standardize and allow us to understand what is the device we are procuring. There were none. This is a simple technology I'm speaking to you, and there were none. Right? HyperExchange created something called Faraday, which is a patented technology. It's in-house built. Today, with the use of Faraday, it has different versions. Today, with the use of Faraday, you can sit at home, evaluate your device, and sell to HX. Today, with Faraday, you can just walk into a retail store, evaluate your device, sell to Faraday. Similarly, when we are procuring in bulk tomorrow, if you're joining us to be a master franchisee or even a say unit franchisee, you will also be doing local procurement, right? So this device allows you to procure each and every device out there with proper facts and data. What is the condition of this device? How much should you pay back to the customer, right? So this gives you entire data using artificial intelligence, using machine learning. We have all the data backed up over here, where it also tells you what is the demand of this device in the market, what is the present value of this device in the market. So basically, even without any domain knowledge, you can enter this business and get a and grow this business even without any domain knowledge in the mobile phone sector today. That's how we have built our technologies around to automate the entire process, in terms of our procurement, in terms of our supply chain, in terms of our sales as well. So we are a strong patent led company with a very very deep technology background to support the entire structure. And next, I'm coming to the leadership team. We have a solid leadership team. uh, uh, leading from the front on our board is CP Gudani. CP is the chairman at HyperExchange. CP is also the CEO of Tech Mahindra. So he is one of the most recognized CEOs in the world. He's one of the top 10 CEOs, not just in India but across
the globe as well. So a great name, right? And apart from the Mainza world, CP sits as a chairman only on Hyper Exchange. So it was a very credible push for us, right? So support from such a personality. Similarly, the other people on board Debu Mukherjee. Debu is the chief marketing officer of UB Group. He sits on the board of Heineken, and he was the former chairman of Coca-Cola. So basically, Debu leads the entire marketing. He has decades of experience in terms of marketing and creating brands in his entire career. And from the financial side, Mukesh Soni is on board. Mukesh is the chief executive director. Was the chief executive director on JP Morgan, and currently he's part of the Apollo Group. So if you know, Apollo is the largest private equity fund in the world. So it's a very strong leadership team that is on top leading HyperExchange, and along with my co-founders Dipanjan and Ashish. Dipanjan is the CEO of this company. Dipanjan has over a couple of decades of experience working across the world. Um, he was part of one of India's biggest IT deals ever, selling Putney to iGate for over a couple of $1 billion. So he has scaled businesses from scratch to billions of dollars before, and now he's on his journey with us to scale HyperExchange. And Ashish used to head the technology for TCS India. He was reporting directly to R&T Ratan Tata, right? So in his previous role, Ashish Ashish was heading the entire content, the entire content and technology for TCS India. So even he has a decade of experience, and this comes with a very HyperExchange comes with a very solid leadership team, and you can probably see on the top right, that's me, Shotanik. I am a fresh college grad. I completed my grad in 2018. Uh, I already co-founded this company in 2016 along with my co-founders. I did my postgrad from Stanford, and I'm the person who was under 30. So basically, I was named Forbes Studying in 30 this year. Right. So moving on to the next, the Faraday technology I just spoke to you about. So basically, coming to the hyper exchange franchisee, universe, you will get to see the Faraday a lot. While the technology is very interesting, what the numbers are really important, right? The technology allowed us to reduce our turnaround time by 3x. What I mean by that, today any of the competitors or say the unstructured market was going out in the market, uh, you know, manually checking each and every device, and then realizing what the issue with the device was. Then they were going out and ordering for the spares. Then the repair was done, and finally after everything was done, it was sold out. And in a lot of cases there was a lot of errors, since it was a manual process. Say for example, you have just procured a device and thought it might require a 700 rupees repair because there's no display. But end of the day you find there's a 7,000 rupees repair, because it's not because of the display. It is actually because the entire IC is not working, right? So that really gave a toss for your entire procurement cycle, right? With Faraday, this was totally done with. Today, our procurement is entirely automated. So while I already have the data, what is the device I'm procuring and what is the issue with the device, right? Before it's coming to my refurbishment center, it's the spares are already ready, right? And say for example, I'll give you a small example. Say a device just needs a change in volume button. All right. If a device just needs a change in volume button, it might be just a 3 minutes repair, right? So before it's in the refurbishment facility, it is already sold out, right? That's how quick the turnaround time happened for us, and gave us an edge over any competitor out there. Similarly, it also gave us a 400% margin, right? But the most important of all, here I'm speaking to you about an unstructured market. Yet over here, we have a 79% return on customers. That was phenomenal. That was phenomenal, and that was something we are really proud about what we could create. We could create a model
where we had customer retention up to 79%. People were rebuying from us after they procured the first device. Right. So basically, you already heard it's a great team backing this up. There's great technology. We got our messaging right in terms of branding with the trust we created with our warranty, etc. But what is there in for you? Here I am talking to you in a market for a market which is $100 billion market globally, and 40% of this market today lies in India. That's how big the market is today. Most of the branded players out there in the refurbished market is not even $1 billion, not even $1 billion company venture out there. That's the biggest opportunity that lies in front of us today. uh, it's a massively growing market. It's growing at over 400% year on year currently, right? That's how quick this market is growing. But if you look at the stats on my right hand side, it's also growing by 79% by value. What I mean by that is today, with the launch of the next device, the prices aren't falling. The prices are going up, right? That allows you to earn better margins as you scale this business, as you move forward with this. So this is a business where the margins aren't falling over time. The margins are actually going up and up and up over time. Most of you are looking at the flagship phones today, right? Which launch of every device, the prices aren't going down. The prices are going up. So similarly, and here I'm speaking about a market where since the silicon chips prices have gone up, the phone prices have gone up significantly. People are looking forward for affordable options, and here we said, you know what, we can give you a product at 50-60% of the price in a market with the same 12 months warranty, with in a similar hyper exchange packed box, sealed packed. You have that unwrapping experience and everything. That's the value proposition I bring in front of you today to join us in this journey. Right. I think this is something we have already covered. It's a massively growing market. This is a pandemic positive model. With pandemic, more and more devices are being required every day, right? So basically, the demand is going up, and while that is true, people are looking forward for more affordable options today, right? So refurbish what was more of a target group of audience where people were looking for aspirational devices at affordable prices. Today, uh, refurbish has become a necessity more than just an aspirational product to look at, right? And all it's an offline plus online model. Today, uh, one of my Mumbai franchisee signed with us just before pandemic happened, right? And while the store was about to open, so it got delayed by months, not just by few months, but almost 6 months and so on, right? Yet he was earning margins selling online, which was totally being which was totally being managed by hyper exchange. So this person had just invested in the stock. Hyper exchange was managing his entire stock liquidation, and that's how big the demand in the market is today, right? Today it's not just offline sales where you get to sell in your territory. You'll also get to sell across pan India with my online distribution channels. And even if tomorrow there's a second wave, third wave, fourth wave, and there are lockdowns, you are still sure you'll be sitting at home and still earning a margin out of every sell out there, right? And it's a low risk model. What I mean by low risk model is today, just like I said, right? When we started off, we realized the greatest story that can be created around hyper exchange is only if we create the customer trust around this model by giving a 12 months warranty, right? Similarly, when we started the franchising this model out, right, we realized we can create this as a great franchising model if we are able to give a minimum guarantee to our franchisees, because we believe there is sales, there is demand, and we can make your sales happen, right? So everything said, for the first 6 months, we'll also give you a 9 months annualized return.
It's a minimum guarantee, right? Will give you 100% stock correction, right? And down the line, will help you with all stock liquidations as well. That's how the hyper exchange model is built, right? So I believe that really gives a great confidence to early investors who are looking forward to try this model out and probably scale along with us, because as I said, it's this market is growing at a 400% year on year, right? Now coming to the franchisee models, right? The first model we have is a master franchisee model, right? For the master franchisee, the, they so so on day first day, master franchisee opens an retail outlet. That's a hyper experience store out there. That's a direct store the master franchisee is involved in and opens on day one. Once this is done, right, he gets he gets he the working gets the working along for the direct sales. The next thing that he invests in is a refurbishment unit, right? And when I mean the refurbishment unit, it isn't a factory or anything. It's about, a 10-seater a 10-seater for refurbishing of devices, right? The entire thing is controlled and automated by Faraday. So again, there's no expertise required for anything to manage the business over here. And last and foremost thing, so refurbishment unit is around the third month what we are looking forward to. And why there's a gap? Because we want to make sure even the franchisee is convinced how the model works, how the hyper-exchange universe works, how things are happening, and everything around it, right? And by the sixth month, they will also build a training facility. So this training facility will allow to create more repair engineers, etc., for their direct refurbishment process, right? Along with creating engineers for centrally for hyper exchange as a brand, and probably other brands as well. So that's the entire idea. Here you're earning margins for direct sales, right? Which is so today typically the margin out in a regular new phone business is between 0.75 to 2 to 3%. That's the highest margin you get earnings from sale of each device. At hyper exchange, the margins are 10 to 12%. So that's how the refurbished market is a very 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 high margin game. So there's a 10 to 12% margin based on sales. There's almost a 3 to 5% margin for procurement, right? There's a 3 to 5% margin on procurement, and on the other hand, for refurbishment, there's a 5 to 7% margin. So the master franchisee enjoys all of these margins for every device. So basically, out of each device, where I'm speaking about, the average price of the device is between 10,000 to 12,000, right? The out of sales, out of procurement, refurbishment and sales, the franchisee is earning at least 20 to 25% margin out of each and every device out there, right? uh, Coming to the next models, I just mentioned the first thing about the master franchisee is opening a direct store. That's a retail store. That's You can see on my right, the retail store that the master franchisee has to open is the hyper experience store. It's a 700 square foot store, and this you can see another added revenue over there. That's the F&B services. So the concept over here is very similar, right? So this is growing phenomenally in China and US. There's a model which also has a cafeteria, so people come over there, experience the device, gets the trust around it, build a trust around it, and eventually they turn out to be your customers over a period of time, right? So every element around us, be it online, be it offline, we have focused on creating the brand that some people can trust, right? And similarly for the other unit franchisee models, these are smaller models. Everything is similar from procurement margins to your product sales and warranty services margins. The only thing is missing in the other two models is the F&B services margins. So this is a 500 square feet and a 100 square feet model, exclusive and express, right? So these are the three models available for unit franchisees.
And for the master and under the master franchisee, all of this unit franchisee comes along. So the master franchisee owns the territory. So under the master franchisee, there are at least 25 unit franchisees, and the master franchisee owns the margin of sales to all this unit franchisees, and also the procurement part and the refurbishment part along with it, right? So yes, having said that, HX is scaling phenomenally, right? I'm looking for like coming over this platform, this Bharat franchises show for the last 26 days. It has been a phenomenal journey for us. For just one region, we had received over 16 applications for master franchisee, right? As a brand, we are out there to support you in every way, in terms of your technology. All processes will be automated. So basically, your ERP to your Faraday to your point of sales, everything will be provided by us in terms of technology. Will do the national branding for you, and also will help you with the local branding part, right? Similarly, we'll provide you with all the trainings and spares, whatever is required. Last and foremost thing, we'll provide you with all the partnerships in terms of, say, stock financing, and as I already mentioned, allowing you to channelize your sales not just offline but online as well. So we'll provide you with all the partnerships and etc. We are looking forward for great partners. Thank you. Open for questions. Thank you very much for a detailed presentation. I think it's a very good opportunity in terms of, you rightly said, during the COVID also, now everything is digital, everything is online. So gadgets like these are everybody has to, kids to, everybody. So I think this is the basic need today. With this opportunity, I think we can now take up some questions also. So I would request my partners, if you can just take on behalf of all the investors, you can take up some questions from your side also. And in the meantime, we can request all the investors to have your question in the Q&A box in the meantime, related to hyper exchange. Any question you have related to financial model or related to anything, we will take up your questions and would ask Mr. Rai directly. So over to you, Rahul, Gagan, Rajesh, anyone who have got any question, please ask. Mr. Roy, can you throw some light on the master franchisee financial once again? Sure. Let me share my screen. So the total investment for the master franchisee is a crore. 25 lakhs is the franchisee fee. 50 lakhs is the stock fee, right? There's a store setup fee of around 11 lakhs, right? And setting up the refurbishment and training unit is another 15 lakhs. So that's the total investment. The ROI is a whooping 42.5%, right? And the payback is within 22 and a half months. So that's the financials overview of the master franchisee. So in case if someone is interested for master franchisee, but he's unable to put up a stock of 50 lakh initially, is it possible that you can consider his application? See, of course, the main part over here is 50 lakhs. The reason we say 50 lakhs is, say, today you might be able to sell just 10 lakhs worth of inventory from your offline store in the first month, right? But you probably would also want to earn the margins of another 40 lakhs by your online sales. That is the reason we suggest you to move to a 50 lakh stock thing. But definitely it's a scalable thing, and we are flexible on that part. So while what we are looking for is not just financial partners, we are looking forward for people who can scale and grow along with us. It's a 400% growing market, 400% growing industry, right? So I am looking forward for partners who can scale up along with us, in this journey. Not just for people who are looking forward to, just invest some money and look forward for returns. That's really important for us. Thank you. So it is loud and clear that you are flexible in consideration. Yes. Thank you. So I also have a question over there from Vaibhav. He's probably asking any options or scope for Tier 3 cities, as it was shown only for Metro and Tier 2. Right.
So basically, if you look at if you probably look at this graph, right? Today, while it's I just mentioned it's $100 billion market, and 40% of this market, 40% of this market today is India. But what these are statistics by say the Gartner report, the Counterpoint report, and they have clearly mentioned the demand in terms of tier 2 and tier 3 are even greater, right? Yet they could not get a figure done, right? And to be on a very personal note, so just before yesterday, I was I was processing the orders for our HX card, right? So these most of the orders aren't from places which have proper addresses even. So these places have mentions like chowk, ye chowk ke samne, ye mandir ke paas mein. So these are places which does not even come under a proper say proper panchayat, right? That is the places these people are looking for the devices from. That is where the demand exactly lies. We can easily scale this business online, but if we have to go to those tier 3, tier 2 places, we need your support. We need that extent of movement, creating local CEOs. I want to work with someone who can be the local CEO of that entire region, and create that magic over there in that place, in that territory. That is what I'm looking forward to, and that is the opportunity in tier 2 and tier 3 today. I hope your answer is clarified. Sure, sure. Very helpful. Any other question? Priti, you have any question? You can unmute. Yeah. सर नो क्वेश्चंस सर सिटी फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ बताएंगे Franchisee as in सिटी master. फाइनेंशियल्स के बारे में Sorry. सर सिटी फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ बताएंगे आप सिटी हाँ Okay. The unit franchises you mean, right? यस 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 Okay. हाँ, तो यूनिट फ्रेंचाइजी का मॉडल यही है, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपका जो सबसे छोटा मॉडल है, जो आपका 100 स्क्वायर फीट का मॉडल है, the minimum investment is 25 lakhs to start with. It has a ROI of 43% and a payback of 14 months, right? Coming to the next models, right? So basically, there is a 50 lakh investment in hyper exclusive, and there's a 55 lakhs investment in hyper experience, right? That's only the difference in the models. So basically, one is a 500 square feet model, another is a 700 square feet model. But if you look at the ROI, it's a 70% ROI in terms of hyper experience, while there's a 51% ROI in terms of hyper exclusive, right? The only reason for this is in terms of hyper experience, there's a added F&B margin the investor is earning over there. So that's the difference over there for the unit franchisee models. थैंक यू Okay. Yes. Any other question? Gaganji, any question? I think there's one question over there from Rajesh. Apart from money, what are the infrastructure requirements in case of place, in prominent place? Does it have to be malls or high footfalls area? It was for query for tier 3 cities, as some investors are asking about that. Yeah. I think you have answered that. Yes, I did. I just did the previous one. I'll answer Rajesh. So Rajesh, yes, if you are looking forward for a master franchisee, it will more be like a backend type of a thing. So except your hyper experience store, right? The refurbishment unit and the training facility would be more of a backend office type of a setup. But yes, if you are going for the unit franchisee models, or say even under master franchisee, the hyper experience store you are going to create, those definitely we are looking forward for, say, high street malls, greater footfall areas. That really makes so here you're speaking about creating an experience for the customer, right? So definitely that has to be a high street, that has to be a great location, proper place. Will definitely help you with the location selection. But yes, that has to be a proper high street area for the experience stores. Sure. Any further question? Gaganji, you have any question? Thank you, sir. It has been answered. Sure. Thank you very much, Mr. Rai, for joining in today. Thank you very much for your time. Now, what we can feel, we have a lot of questions coming in, a lot of investors already there. So I think
our consultants and panelists, they will get in touch with all the investors. If there is any interest further, any question, they will take one-on-one with you, so that all the questions would be answered by you. Sure. Thank you very much Thank you for so much. joining in, and thank you very much for your time as well. Thank you. So with that note, we will move on to the next brand for tonight. It is Eurocan Global. Eurocan Global is North India's leading education and immigration consultancy brand. Mr. Amandeep has joined us. Thank you very much, Amandeep ji, for joining in, for your time as well, for your support as well to the show. Franchise India is warmly welcoming you in this show. And plus, just for about this brand, it's a 14-year-old brand. 11 plus offices we have in India, and the biggest asset, I think, USP is they have got 48 countries association with them. So let's understand this brand from the brand owner himself. So Mr. Amandeep Singh has joined us. He will take us through the journey and would make us understand that what is this opportunity and how we can be part of this opportunity. Thank you very much for joining in. Amandeep ji, over to you. थैंक यू संजय जी फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और नॉर्थ इंडिया से जो भी लोग जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। बिफोर आई स्टार्ट अप प्रेजेंटेशन में एक छोटा सा अबाउट कंपनी वीडियो प्ले करना चाहूँगा, उसके बाद विल बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। अब आपको किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आप बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, अपना टाइम और एनर्जी पूरी तरह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बदले में जब कुछ रुपए ही आपको मिलते हैं तब आपका फ्रस्ट्रेटेड होना जायज है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी ग्रोथ और फायदा किसी और का होता है। लेकिन अब वो दिन गए, क्यों ना आप खुद के ही बॉस बन जाए। जब खुद का बिजनेस करना इतना आसान हो, जब कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट मिले और जहां बिजनेस चलाने में आपको कांस्टेंट सपोर्ट भी मिलता रहे, वो भी सीधा एक्सपर्ट से, तो ऐसा सुनहरा मौका मिस नहीं करना चाहिए। पेश है यूरोकैन ग्लोबल की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। यूरोकैन ग्लोबल नॉर्थ इंडिया का लीडिंग एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट डेस्टिनेशन है। स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट मिस्टर अमनदीप सिंह का 14 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस इस फ्रेंचाइजी मॉडल को और ज्यादा डिजायर्ड बिजनेस बनाता है। यूरोकैन ग्लोबल के 2 फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं। पहला, कंसल्टेंसी सेंटर, इसमें आप कमीशन के थ्रू रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रॉयल्टी भी नहीं देनी है और एवरेज पे बैक पीरियड 11 महीने का है। दूसरा मॉडल है कंसल्टेंसी प्लस ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें आप कमीशन और क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसमें एवरेज पे बैक पीरियड 9 महीने का है। किसी भी एक मॉडल को चुनने पर आपको मिलता है कांस्टेंट सपोर्ट, जैसे सपोर्ट इन ऑफिस शॉर्टलिस्टिंग, डिजाइनिंग ऑफिस लेआउट, ऑफिस ब्रांडिंग, कंपनी और कस्टमर के बीच इफेक्टिव इंटरेक्शन के लिए CRM सपोर्ट, स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ऑफरिंग प्रिंट मटेरियल्स एंड गाइडेंस, डिजिटल प्रमोशन, सपोर्ट इन कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी विजिट्स, रीजनल मैनेजर द्वारा न्यू ब्रांच के मंथली विजिट्स, ब्रांड प्रमोशन फॉर लोकल मार्केटिंग, फैन विजिट्स टू अब्रॉड वगैरह वगैरह। बस इतना ही नहीं, आपको जानकर खुशी होगी कि एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के लिए यूरोकैन ग्लोबल को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पायनियर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया अवार्ड मिला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा गौरव अवार्ड मिला है और पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया है। यूरोकैन ग्लोबल 40 से ज्यादा कंट्रीज के साथ डील करता है, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ऐसी किसी भी जगह पर आप सक्सेसफुली यूरोकैन ग्लोबल की फ्रेंचाइजी शुरू करके अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए और आज ही संपर्क करें यूरोकैन ग्लोबल। जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी के बारे में जैसे कि आपने देखा होगा कि वी आर अ कंपनी जो लोगों को बाहर पढ़ने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए और परमानेंट पर्पसेस पे जाने के लिए हेल्प करती है। और नॉर्थ इंडिया की मार्केट में वी हैव वर्कड हार्ड टुडे एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट
कि हमें अपना नाम बताने के लिए किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जो हमने मेहनत इस लेवल पे करा है। सो एज अ फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, एज अ बिजनेस जिसमें आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, एक ऐसा रिसेशन प्रूफ और एनी सॉर्ट ऑफ जैसे कोविड के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बुरी तरह से हिट हुई हैं, एंड देयर हैज बीन न्यू ट्रेंड्स इनटू वेरियस इंडस्ट्रीज। ये एक ऐसा फील्ड रहा है जो हर चीज से बचा रहा है, और आने वाले टाइम में भी इसका कुछ डिक्लाइन का या कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है कि ये मार्केट स्लम में जाएगा, और हर साल ग्रो कर रहा है। पिछले साल के जो डेटा नंबर आए थे कि इंडिया से 8 से 10 लाख स्टूडेंट हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं। खाली कनाडा में इंडिया से 1,70,000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए। सो यू कैन इमेजिन द सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम। अगर 1,70,000 बच्चों को हम 28-29 स्टेट में डिवाइड भी करते हैं तो कितना बड़ा नंबर बन जाता है। और बहुत लिमिटेड सिटीज रही हैं, वो जो मेजर रही हैं वो नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया से ही रही हैं, जहाँ से स्टूडेंट अच्छे नंबर में पढ़ने के लिए बाहर गए हैं। सो अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जैसे कि हम हर रोज नया सिटी कवर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आज बहुत सारे शहरों से लोग जुड़े होंगे। सो कीपिंग इन माइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, कुछ ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में, जो कि अप्रोक्सीमेट 5 से लेके 10-12 लाख तक है, अच्छा प्रॉफिट बन सकता हो, ROI 6 महीने से लेके 1 साल तक का हो, इंडिया के लीडिंग ब्रांड का आप हिस्सा बन सकते हो, एक कंपनी जिसका ऑलरेडी अच्छा सिटीज में, डिफरेंट सिटीज में ब्रांच लोकेशंस का ट्रैक रिकॉर्ड हो, एक्सपर्टीज हो अपने काम में, ब्रांड वैल्यू अच्छा हो, मार्केटिंग अच्छी हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हो, देन यूरोकैन ग्लोबल इज अ प्लेस टू बी। वी हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल इन नॉर्थ इंडिया, और बहुत सारे शहरों में हमारे ऑफिसेज हैं, एंड जो हमें बाकी इंडिया से रिस्पॉन्स आ रहा है, वी हैव बीन गेटिंग इंक्वायरीज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज जहाँ पे हमारे ऑफिसेज नहीं है। सो फ्रेंचाइजी मोड के थ्रू, फ्रेंचाइजी माध्यम के थ्रू, फ्रेंचाइजी इंडिया की टीम के साथ, सपोर्ट के साथ, वी आर एक्सपेंडिंग अक्रॉस different cities. We have signed up franchises in many cities and we are in process of signing up many more. फ्रेंचाइजी का मकसद वही रहता है कि एक एसोसिएशन एक हाथ अपने एंड से ब्रांड लाता है, प्रोडक्ट लाता है, मार्केटिंग लाता है, सारा कुछ लाता है, दूसरे हाथ से वो इन्वेस्टर आता है, वो इन्वेस्टमेंट लाता है, अपना टाइम लाता है, अपना एनर्जी लाता है, दोनों मिलके एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। मेरे जैसे बंदे के लिए एज अ फ्रेंचाइजर, खाली या कोई भी वर्ल्ड का आप लीडिंग ब्रांड ले लो, इफ अगर फ्रेंचाइजी मॉडल ना होता तो मैकडी, मैकडॉनल्ड्स हो गया, कोई भी वर्ल्ड की लीडिंग चेन लगा लो, आज के टाइम पे उनका इतना एक्सपेंशन ना हुआ होता। सो फ्रेंचाइज इज मोर लाइक अ मैरिज वे यू हैव लॉन्ग रन प्लान्स, आप दोनों के विजन आपस में मिलते हैं, आप दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, लाइफस्टाइल सेम है, बहुत सारी चीजें, जैसे काम में विजन हो गया, फाइनेंशियल गोल्स हो गया, एक कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं आप एक दूसरे के काम के लिए। सो अगर यूरोकैन ग्लोबल हरियाणा में कहीं फ्रेंचाइजी दे रहा है, दिल्ली में फ्रेंचाइजी दे रहा है, दोनों पार्टनर आप और मैं मिलके उसमें क्या कंट्रीब्यूट करें। वन साइड कंट्रीब्यूशन होगा तो काम नहीं करेगा, अगर खाली फ्रेंचाइजर काम कर रहा है, फ्रेंचाइजी नहीं करेगा तो फेलियर है, अगर खाली फ्रेंचाइजी कर रहा है, फ्रेंचाइजर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो फेलियर है। तो बहुत चीज़ों पे हमने काम करा है, 1.5-2 साल हमने इन्वेस्ट करे हैं अपना फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने के लिए, और बहुत मेहनत के बाद एक अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल आपके लिए लेके आए हैं। सो 2 मॉडल्स हैं हमारे, एक कंसल्टेंसी सेंटर, दूसरा कंसल्टेंसी प्लस ट्रेनिंग सेंटर। कंसल्टेंसी में क्या रहता है, हम खाली वीजा रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, जिसमें स्टूडेंट वीजा हो गया, ट्रैवल के रिलेटेड वीजाज हो गए, परमानेंट रेजिडेंसी, इमिग्रेशन हो गया, उन वीजा की सर्विसेज दी जाती हैं। सेकेंड इज कंसल्टेंसी प्लस ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें वीजा के साथ साथ हम क्लासरूम भी रखते हैं। क्लासरूम में हम कोर्सेज नहीं करवाते, बट जो बाहर जाने से अब्रॉड रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, IELTS हो गया, टॉफेल हो गया, PTE हो गया, सेल्पिप हो गया, जो सिर्फ बाहर से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं, उनकी प्रेपरेशन करवाते हैं। फर्स्ट मॉडल में खाली वीजा सर्विसेज आपके रेवेन्यू का सोर्स होता है, सेकंड में वीजा सर्विसेज प्लस क्लासरूम ट्रेनिंग के थ्रू आप जो है रेवेन्यू अर्न करते हो। फ्रेंचाइजी फीस हमारी 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक जाती है, अगर आप मॉडल 1 में देख रहे हो, डिपेंडिंग आप कौन सी सिटी में फ्रेंचाइजी ले रहे हो। सेकेंड मॉडल में 2 से लेके 4 लाख तक जाती है। वी आर नॉट वेरी रिजिड कि हमें हर सिटी में 5-5, 10-10 ऑफिस खोलने हैं। वी आर ओपन
ओपन टू हैव एसोसिएशन विद पीपल जो लॉन्ग रन में काम करना चाहते हैं, कि ये नहीं कि जैसे मैंने बताया कि ये वो बिजनेस नहीं है जो आज चल रहा है कल नहीं चल रहा है, ये आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, 5 साल बाद भी चलेगा, 10 साल बाद भी चलेगा, 20 साल बाद भी चलेगा। जो पिछले सालों का इसका ट्रेंड देख लो, और आगे जो नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड हर साल बढ़ने ही बढ़ने हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन वी वांट कि अगर एक सिटी में एक पार्टनर फिगर आउट कर लिया है, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे, उसका कंपनी को भी बेनिफिट होगा, प्लस उस बंदे को वो फील आना चाहिए कि यार ये यूरोकैन ग्लोबल मेरी सिटी में मेरा ब्रांड है, ये किसी और की कंपनी नहीं है, ये मेरी कंपनी है। क्योंकि फ्रेंचाइजी में बहुत ये चीज रहती है कि यू डोंट फील लाइक योर ओन ब्रांड बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू मेक मेनी डिसीजन, यू आर नॉट अलाउड टू हैव थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू एज इफ यू आर इनटू फ्रेंचाइजी। हमने जो मॉडल डिजाइन करा है इस हिसाब से डिजाइन करा है कि इट इज योर ओन कंपनी, बस जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है सिर्फ उस सिस्टम में रह के काम करना है। Along with these models, we also invite जो इस साल के टाइम पे बहुत लोग घर से काम कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वो खाली 1,25,000 पे करके दे कैन ज्वाइन यूरोकैन ग्लोबल एज अ वर्क फ्रॉम होम एसोसिएट, जिसमें आपको सिर्फ एक पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फोन कनेक्शन चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। एवरेज पे बैक टाइम पीरियड दोनों में 9 से लेके 11 महीने का है। एवरेज आरओआई 5 साल का 300 से लेके 700% तक जाता है। रेवेन्यू सोर्सेस फर्स्ट में कमीशन है, सेकंड में कमीशन प्लस क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। और जो सेटअप वन है जिसमें मैंने आपको खाली वीजा सेटअप बताया था, उसमें 6 लाख के आसपास आपका सेटअप का कॉस्ट, 3 महीने की वर्किंग कैपिटल होगी, 1 लाख के आसपास मंथली जो सैलरीज हो गए, प्लस हमें जो रेवेन्यू आता है पर स्टूडेंट, पर क्लाइंट, पर लीड, पर क्लोजिंग, वो 70,000 से लेके 1.5 लाख के बीच रहता है। यहाँ पे हमने 90,000 की एवरेज ली हुई है। हर प्रोसेसिंग साइकिल का 1 से लेके 3 महीने तक का साइकिल रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आज यूके के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, उसका रिजल्ट 1 दिन में नहीं आएगा, उसको 2 से 3 महीने लगते हैं। सो जो रेवेन्यू हमारा पहला आना शुरू होता है वो तीसरे चौथे महीने से आना शुरू होता है। As you can see in the sheet, the revenue is coming from 4th, 5th month onward. पहले में थी 3rd month में आना शुरू हो जाएगा। And these figures are keeping in mind very lowest numbers की हर सिटी में ये परफॉर्म करे, 5 लाख पॉपुलेशन वाली सिटी में भी और 20 लाख पॉपुलेशन वाली सिटी में भी। और जितना बड़ा सिटी है, जितना बड़ा मार्केट है, ये नंबर्स उतना हायर रहेगा। रेवेन्यू फर्स्ट साल का जो प्रोजेक्टेड है, मिनिमम हर मार्केट पे परफॉर्म कर सकता है, वो 26 से लेके 30 लाख तक रहेगा। 2-2.5 लाख का आपको एवरेज प्रॉफिट है, ये जो काम छोड़ के जाएगा, अगर मिनिमम टू मिनिमम एवरेज लेके चल रहे हैं। अगर मार्केट अच्छी है, पॉपुलेशन सिटी की ज्यादा है, अब लाइक नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे बड़े शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 10-10, 15-15, 20-20 लाख है, सो यू हैव एक्सेस टू वाइडर ऑडियंस। और जो फिगर हमने यहाँ पे सेकंड, थर्ड ईयर में रखी है, फोर्थ ईयर में रखी है, फिफ्थ ईयर में रखी है, जहाँ पे आपका मंथली प्रॉफिट 5 लाख तक चला जाता है, वो आप बस फर्स्ट ईयर में अचीव कर सकते हो। हमने कोई इसमें हैपहैजर्ड फिगर नहीं लिए कि बहुत रोजी पिक्चर दिखे कि आपको यार इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बहुत प्रैक्टिकल नंबर्स हमने लिए हैं जो हम ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं और ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं पिछले 14-15 सालों में। क्योंकि इसमें जो आपका क्लाइंट्स रहता है वो ये हजारों में नहीं रहते, वो लेस देन 3 डिजिट्स में रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक सिटी अगर साल की 100 एप्लीकेशन कर रही है, दैट मीन्स दे आर हिटिंग अ ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ 1 CR, जैसे हम 5 ईयर 6 ईयर में जाके अचीव करते हैं। अगर 5-6 ईयर का हम जाके अचीव कर रहे हैं, 1 CR का 40 लाख अगर आपके खर्चे निकाल दो, 50-60 लाख आपको बच रहा है, 5 से 6 लाख आपका जो प्रॉफिट है। हम जो एवरेज प्रॉफिट जो अच्छी फिगर निकलती है वो 1 साल बाद निकलती है। उसका रीजन क्या है? पहले 3 महीने का रिजल्ट आपको 4th, 5th, 6th मंथ में आएगा, 4th, 5th, 6th का आपको 7, 8, 9 में आएगा, 9, 10, 11 का आपको 11, 12 में आएगा। सो जो आपको पूरा फिगर मिलेगा कि यार मैंने 1 साल में, जो बिजनेसमैन की भाषा में होता है, पंजाब में बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं कि भाई इतना लगाया, इतना मेरा खर्चा है, इतना मेरे को बचा है, वो जो आपको फिगर अच्छे से फील होगा, वो 1 साल का आपको पता चलेगा कि मैंने बिजनेस में डे 1 पे 5 लाख खर्चा, फिर 5 लाख ऑफिस सेटअप पे खर्चा, फिर 3 महीने का 5 लाख मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए खर्चा करा, मेरा टोटल 15 लाख खर्चा आया। 15 लाख मेरे को खर्चा करके 1 साल में मैंने 50 लाख का बिजनेस करा, 15 लाख मेरे खर्चे निकाल के 35 लाख मेरे को बचा। 35 लाख का मेरा मंथली जो एवरेज है 2.5 से लेके 3 लाख के बीच आया। दिस इज हाउ यू कैन कम डाउन टू योर प्रॉफिट्स एंड योर फिगर्स, और बहुत अचीवेबल और प्रैक्टिकल नंबर्स हैं इसमें।
सेटअप 2 में बाकी चीजें सारी सेम है, बट इसमें खाली क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी एडिशनल एड ऑन हो जाती हैं। सो क्लासरूम का एडिशनल सेटअप कॉस्ट हो गया, क्लासरूम की स्पेस बढ़ने की वजह से थोड़ा सा रेंट बढ़ जाता है, थोड़ा सा डिपॉजिट बढ़ जाता है, थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल, एंड एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम थोड़ा सा सैलरीज जो है वो भी बढ़ जाती हैं। सो सैलरीज अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 लाख के आसपास रहती हैं। देन आफ्टर दैट इसमें भी जो रेवेन्यू है वो सेम ही रहेगा, थर्ड फिफ्थ फोर्थ मंथ ऑनवर्ड जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में इसमें जो एडिशनल रेवेन्यू आपको मिलेगा वो है क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप जो फीस अर्न करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 12 से 15 स्टूडेंट है, पर डे आप 6 बैचेस रन कर रहे हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्वार्टर के आप 180 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है एक साल का 33 लाख रुपीज आ रहा है। दैट मीन्स पहले मॉडल से कंपेयर्ड आप 60 लाख के आसपास एक साल में बिजनेस कर सकते हो, जो कि 5 लाख आपको प्रॉफिट छोड़ के जाएगा आपके खर्चे निकाल के। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड इसका जो फिगर है वो 1 CR क्रॉस कर जाता है। सो जितनी भी टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख से लेके 15 लाख तक है, दे कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर सेकेंड मॉडल। रीजन बीइंग आपके पास 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रहेंगे। जो बड़ी सिटीज हैं जहाँ पे IELTS सेंटर्स बल्क में है, उनको मैं रेकमेंड करूंगा दे ऑप्ट फॉर मॉडल 1। ये जो सिचुएशन है, जो हमने रिपोर्ट कंपाइल करी है, रिसर्च करी है सारे कंपटीशन की, दैट कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सिटी यू वांट टू ओपन इन। एक और चीज जो पूछी जाती है, जैसे मैंने मेंशन करा कि दोनों में से सपोर्ट क्या दे रहे हैं एक दूसरे को। सो हमने जो मॉडल डिजाइन करा है, हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए करा है कि जो भी फ्रेंचाइजी या पर्सन हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है, उनको इस फील्ड की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमें उनको इस हिसाब से सपोर्ट करना है कि एज अ लेमैन वो सारा कुछ मैनेज कर पाए। सो साइट कैसे लेनी है, कितना एरिया लेना है, उसका सेटअप कैसे करना है, कितना उसका रेंट होना चाहिए, उसमें ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसमें किस तरह का वुड वर्क करना है, एल्यूमिनियम वर्क करना है, PVC करना है, किस तरह से काम करवाना है, कितना स्टाफ हायर करना है, उसको सैलरी कैसे देनी है, कितनी देनी है, कैसे उनकी ट्रेनिंग करनी है, क्या उनको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, A to Z ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम अपना खुद का ऑफिस सेटअप कर रहे हैं कि हम ये सोच के करें कि हमने वहां पे स्टाफ रखा है, स्टाफ को कुछ नहीं आता, हमने सारा कुछ खुद करवाना है, उसी तरह से हमने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया जिसमें A to Z ऑफ एवरीथिंग वी गाइड टू अवर फ्रेंचाइजी ऑफिस। कंपनी के बारे में जब बात आती है, 14 साल से काम कर रहे हैं, दिस ईयर वी कंप्लीटेड अवर 14th ईयर ऑन April 30th, और 40 से ऊपर कंट्रीज में डील करते हैं, यू नेम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। और बहुत सारे जो हमारे पास फ्रेंचाइजी इंक्वायरी आते हैं, उनका प्रश्न यही रहता है कि कंपटीशन के मुकाबले हमारे पास एडवांटेज क्या है। कंपटीशन के मुकाबले हमारे पास एडवांटेज है हमारा पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूके में अच्छी हैं, कनाडा में अच्छी हैं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी हैं, न्यूजीलैंड में अच्छी हैं, या कोई यूरोप की एक आध लिमिटेड कंट्री है। वी हैव दिस एडवांटेज ऑफ बीइंग ए ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें सारी कंट्रीज का पोर्टफोलियो अवेलेबल है। 13 से ऊपर अवार्ड मिले हैं हमें हमारे काम के लिए, जिसमें से चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑनरेबल पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, HRD मिनिस्टर ऑफ पंजाब, HRD मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड एंड फ्यू अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने हमारे काम के लिए, या जो भी हम एजुकेशन में थ्रू अंडर द ब्रांड ऑफ यूरोकैन ग्लोबल कोचिंग के, ट्रेनिंग के कुछ भी प्रोग्राम्स में करते हैं, उन्हें ऑनर किया गया है। 50 से ऊपर कंट्रीज से हम सर्टिफाइड है, जिसमें यूके, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड बाकी 40-50 कंट्रीज हैं जिनसे हमें सर्टिफाइड करा गया है। बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं यूके ब्रिटिश काउंसिल से जो इंडिया में सर्टिफाइड है, एंड यूरोकैन ग्लोबल इज वन ऑफ देम, जो आपको यूके एजुकेशन प्रमोट करने के लिए एक एड ऑन एडवांटेज देता है। कुछ इवेंट्स की कवरेज जो नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा में हमने ऑर्गेनाइज करे थे, उसके क्लिपिंग्स हो गए। नॉर्थ इंडिया में हमारे बहुत सारे चैनल्स पे टॉक शोज आते हैं ऑन इमिग्रेशन, एजुकेशन एंड ट्रैवल। ये आपको एक बड़ा अच्छा नॉर्थ इंडिया में एडवांटेज दे देता है, जब भी चैनल्स के माध्यम के राही, टीवी के माध्यम के राही लोग आपसे जुड़े रहते हैं। एंड वी आर अ वेरी ट्रस्टेड नेम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, रीजन बीइंग ये जो टॉक शोज हमारे डिफरेंट चैनल्स पे आते हैं। हजारों स्टूडेंट हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मंथली विजिट करते हैं, एंड यू कैन सी जो हमारा रीच है, खाली नॉर्थ इंडिया का मैं बोलूंगा उसमें 90% इज अ कंट्रीब्यूशन, 50 लाख 5 मिलियन के आसपास है। सो बहुत सारे स्टूडेंट हर रोज रिव्यूज छोड़ते हैं। कुछ प्रेस क्लिपिंग्स जो हमारे डिफरेंट इवेंट्स, अवार्ड फंक्शन हुए हैं,
सेमिनार्स या जो वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में अक्रॉस नॉर्थ। हमने लास्ट ईयर एजुकेशन एंड सेमिनार फेयर करा था जिसमें हज़ारों के आसपास स्टूडेंट आए थे। कंबाइंड 22 सिटी का टोटल गैदरिंग 10,000 से ऊपर था। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वॉल्यूम वी हैड व्हेन वी डिड दीज इवेंट्स। नॉर्मल ऑफिस का ग्लिम्स जिसमें हर रोज़ 10 से लेकर 50 स्टूडेंट तक विजिट करते हैं। कुछ स्टूडेंट जिनके जनवरी ऑनवर्ड वीज़ाज आए हैं। इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करनी चाहूँगा, ये वो स्टूडेंट है जिनके वीजा उस टाइम पे है जब सारी कंट्रीज बंद थी या ओपन अप होनी शुरू हुई थी। तो बहुत ज्यादा कोविड का या लॉकडाउन का काम पे इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, बट वो जीरो पे नहीं आया जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हो गया था। तो जैसे कि बोला जा रहा है कोविड 3 वेव हिट करेगा, उसके सिनारियो बन रहे हैं। उस केस में भी हमारा काम बंद नहीं हुआ क्योंकि आज के टाइम पे पूरी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज ने, एजुकेशन ने सिस्टम इस हिसाब से बना लिया कि इवन ड्यूरिंग कोविड एम्बेसीज काम कर रही थी, फाइल सबमिट कर रही थी, स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे। सो हजारों स्टूडेंट, आज तक की डेट में 10,000 से स्टूडेंट्स का हम सपना पूरा कर चुके हैं बाहर जाके पढ़ने का, और हजारों स्टूडेंट्स हमारे पास हर वीक और ब्रांचेस में विजिट करते हैं। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आपके पास किसी कंसल्टिंग फील्ड में, किसी एजुकेशन फील्ड में कुछ एंटर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि हम वो फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज नहीं देख रहे जिन्होंने एज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है कि मैंने साइड पे 10 लाख लगा दिए, काम अपने आप चलता रहेगा। सो वी वांट पीपल हु वांट टू एक्टिवली एंगेज इनटू बिजनेस, जो खुद बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो खुद देखना चाहते हैं कि यार इस बिजनेस को आज अगर मैं प्लांट लगा रहा हूँ कि मेरे को साल बाद ये प्लांट मेरा पौधा बनेगा, पौधा फिर बड़ा होकर मेरा 5 साल 10 साल बाद पेड़ बनेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन वी वांट कि अगर किसी भी सिटी में हम ऑफिस ओपन करें, वो ऑफिस हमारा हमेशा के लिए चलता रहे, वो कभी ऑफिस हमारी वजह से या फ्रेंचाइजी की वजह से हमें बंद ना करना पड़े। सो वी आर वेरी पर्टिकुलर विद द काइंड ऑफ पीपल वी एसोसिएट विद। और उसका आपको एक अच्छा जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो मैं आपको देना चाहूंगा कि आप जो भी अपनी हार्ड अर्न मनी होगी, क्योंकि फ्रेंचाइजी में जो लोग आते हैं वो बहुत बड़े सपने के साथ आते हैं कि हम इतने पैसे लगा रहे हैं, वो अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, पैसे लगाते हैं और एक होप के साथ आते हैं। एंड बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा है इस फील्ड में एक चीज जो ड्रॉबैक वाली रहती है, वो होप्स पूरी नहीं हो पाती क्योंकि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होती और उसका एक क्लियर प्री डिफाइंड सिस्टम नहीं होता। हमने वो दोनों चीजें काम करी हुई हैं। जितनी भी फ्रेंचाइजी की कॉल्स फ्रेंचाइजी इंडिया की तरफ से शेड्यूल हुई हैं, हमने वो चीज बड़ी पर्टिकुलरली मेंशन करी है और उसका काफी अच्छा हमें फीडबैक और सपोर्ट मिला है। सो आप भी अगर फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या इन फ्रेंचाइजी गाइड्स को गो थ्रू करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मॉडल अच्छे से समझना चाहते हैं, या आपके सिटी के हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी सिटी के हिसाब से अगर कोई छोटे शहर से है जिसकी पॉपुलेशन ही 1 लाख है, या कोई बहुत बड़े शहर से है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख है, आप देखना चाहते हैं कि मेरी सिटी में क्या हो सकता है, मेरी सिटी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी सिटी के हिसाब से प्रोजेक्टेड फिगर्स और नंबर चाहते हैं, आप फ्रेंचाइजी इंडिया की टीम को कांटेक्ट करके मेरे साथ या मेरी टीम के साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। सो आई विल टेक ओवर द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर नाउ। ओवर टू यू। ओवर टू यू स्टैनली और संजय जी। Thank you so much, Amandeep ji. Wonderful presentation it was. And now is the time that we can take a few questions from our consultants who have joined. So over to you, Gagan ji, Sandeep ji, Rajesh sir, if you want to ask any question from the brand. Aman ji, good evening. Good evening ji, good evening. Go ahead. Although the show is for North India, but one of my investors is from Mumbai. He has got a query कि मुंबई में आप कैसे सपोर्ट करेंगे, मुंबई में आपका कोई एग्जिस्टिंग ऑफिस है? दिस इज व्हाट ही वांट्स टू नो। मुंबई का शो जो वेबिनार था, वी हैड स्किप्ड दैट, वो अटेंड नहीं कर पाए थे। सो मुंबई इज द प्लेस जहाँ पे बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत सारी एम्बेसीज यूरोप की वहाँ पे अवेलेबल है। सो वी आर वेरी नीड टू हैव एन ऑफिस इन मुंबई। बहुत सारी इंक्वायरीज इन प्रोग्रेस भी हैं। सो मुंबई से अगर कुछ जुड़े हुए हैं, मुंबई से साइन अप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा एक प्रॉमिसिंग हम आपको रिटर्न दे सकते हैं। कुछ शहर हैं जो साउथ इंडिया के, कुछ सिटीज हो गए, नॉर्थ इंडिया के कुछ सिटीज हो गए, जो हमें पता है कि परफॉर्म करेंगे कि आंखें बंद करके कि वहां पे हमें बैट लगाना हो, हम लगा सकते हैं। ऑल वी वांट इज एक अच्छा इन्वेस्टर, लोकल पार्टनर जो खुद फुल टाइम इस बिजनेस को कमिट कर सकता है, लॉन्ग रन के लिए चलाना चाहता है। सो आप मेरे साथ कल या जब भी आपके पास अवेलेबिलिटी, आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू शेयर एंटायर मुंबई का जो हमने प्रेजेंटेशन और प्लान बनाया है कि कितना वहां पे नंबर अचीव हो सकता है, क्या लोकेशंस हमने फिगर आउट कर रखी हैं, कितना 1 से लेके 5 साल तक हम वहां पे अचीव कर सकते हैं। सो आई विल बी हैप्पी टू शेड्यूल कॉल। आप उन फ्रेंचाइजी इंडिया की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
Sure, I'll connect. Thank you. Thank you. हेलो अमनदीप जी, एक्चुअली लाइक हेलो सर, एग्रीमेंट हेलो। टर्म क्या रहेगा कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए? जो एंड हमारा ऑल्सो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट लाइक कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, लाइक लखनऊ ले लेते हैं हम, तो उसमें क्या स्कोप है, कितनी फ्रेंचाइजीज आ सकती हैं? जो फ्रेंचाइजी स्टैंडर्ड एग्रीमेंट रहता है वो 5 साल का रहता है, और जो नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी यूनिट्स हम मार्केट देख के कंपाइल करते हैं। लखनऊ के लिए मैक्सिमम 2 लोकेशंस के अलावा करके कोई फायदा नहीं है। हमने जो वहाँ की पॉपुलेशन का स्टडी करा था, टारगेट हमारा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है स्टडी अब्रॉड के लिए, बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेल ग्रोइंग मार्केट्स फॉर पीपल हु वांट टू गो अब्रॉड। और बहुत सारी इंक्वायरीज हमें आती हैं लखनऊ से, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। आइदर उनको दिल्ली जाना पड़ता है कंपनीज में अप्लाई करने के लिए, और जो लखनऊ में कंपनीज हैं, दे आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड विद नॉलेज और एक्सपीरियंस टू गाइड देम इन अ बेटर वे। सो एज ऑफ नाउ 1 से 2 नंबर फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज हम वहां से देख रहे हैं। और अगर कोई प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है हमारे साथ, वो एक बार हमारे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू गाइड यू कि वहां पे क्या हमारे प्रोजेक्टेड नंबर्स है और कैसे आपको वहां से रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। गुड इवनिंग अमन जी। एक इन्वेस्टर है हमारे साथ, मिस्टर वैभव। उनका क्वेश्चन है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए आपका मॉडल है, उसमें स्टाफिंग का कैसे रहेगा सर? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वाला जो मॉडल है वो वर्क फ्रॉम होम के जैसे ही है, आप घर से काम कर सकते हैं, और इट इज मोर लाइक वर्क फ्रॉम होम। वुमेन एंटरप्रेन्योर वाला मॉडल, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स एन एक्चुअल ऑफिस जो हमने टायर 1, 2, 3 सिटी में रखा है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, या अभी फुल टाइम जॉब में है, फुल टाइम इस बिजनेस में जंप नहीं करना चाहते, कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं पहले, फिर जाना चाहते हैं। हमें अपने काम पे कॉन्फिडेंस है कि जो हमारा मॉडल है वो सक्सेसफुल है। मेरे को ये जल्दी नहीं होगी कि मैं फटाफट फ्रेंचाइजी बेचूं और बंदे से पैसे लेके अपना निकलूं। मेरे को ये होगा कि वो 1,25,000 खर्चा करके बिजनेस शुरू कर पा रहा है, फिर उसी में से प्रॉफिट कमा के अपना ऑफिस सेटअप कर रहा है और बाकी का सारा सेटअप कर रहा है। वील बी हैप्पी टू सपोर्ट दैट एज वेल। सो वर्क फ्रॉम होम वुमेन एंटरप्रेन्योर मॉडल में जो भी जुड़ना चाहते हैं, दे कैन साइन अप एज अ यूरोकैन ग्लोबल फ्रेंचाइजी, और 3 से 6 महीने में हमारी कोशिश रहेगी आपके पास आपका खुद का फ्रेंचाइजी ऑफिस होगा, with the money and the profit that you generate from Eurocan Global itself. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Great. So, any other question? कोई और Yeah, question hi. Good evening, Yeah. Amandeep ji. Good evening, Sandeep ji. I have only 2 questions. Ek to, because we have a different formats, so what will be the exclusivity given to the franchisee partner? And the second question is, there are a lot of ancillary income associated with the this, like a person may require the foreign exchange requirement of a student and his parents also. So do we have a tie-up with the foreign exchange, and that could be the extra earning for the franchisee partner? ये काफ़ी अच्छी आपने चीज़ पूछी है। ऑक्सिलरी इनकम बहुत रहती है हमारे फील्ड में। सो जो भी ऑक्सिलरी इनकम होती है, वी गाइड अ फ्रेंचाइजी कि आप वहाँ से कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो। जैसे फॉरेक्स टाइप्स हो गया, एयर टिकट्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अपोस्टाइल सर्विसेज हो गए, ट्रांसलेशन सर्विसेज हो गए, इंश्योरेंस हो गए जो स्टूडेंट बाहर जाने के लिए लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंकिंग पार्टनर्स जो हो गए, फॉरेक्स पार्टनर्स हो गए, फाइनेंस कंपनीज हो गई, ट्रैवल कंपनीज होगी, वो एजुकेशन एजेंट्स को 1% कमीशन देते हैं। सो इस केस में भी फ्रेंचाइजर कोई शेयर नहीं लेता, एंटायर प्रॉफिट इज गिवन टू फ्रेंचाइजी, जो भी ऑक्सिलरी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। और एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट का जो टर्म्स है वो सिटी टू सिटी वेरी करेगा। इफ यू आर गेटिंग अ गुड पार्टनर इन अ गुड सिटी जो कमिट करता है कि मैं इतना मार्केटिंग बजट इन्वेस्ट करता हूँ, इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मैं जनरेट कर सकता हूँ, और बाद में मैं खुद अगेन वट एवर सिटी वी साइन अप, अगर उसमें हम दूसरा साइन अप कर रहे हैं, हम पहले को बता के करेंगे कि हम यही लोकेशन साइन अप कर रहे हैं, विद देयर कंसेंट ओनली इफ यू प्रोसीड। अगर वो बोलेगा कि मैं इस चीज के लिए फेवरेबल नहीं हूं, मैं वहां पे सेटअप करना चाहता हूँ, विल गिव देम नीडफुल टाइम कि वो खुद का अपना ऑफिस सेटअप करना चाहें। क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी टू प्लांट टू मेनी ट्रीज वेरी नियर बाय और किसी की ग्रो ना हो। हमारा मेन मकसद है ग्रोथ करना और बिजनेस जनरेट करना। वो तभी हो पाएगा जब सबको नीडफुल इनफ स्पेस और एयर मिल रहा है। सो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट वी कैन कंसिडर ऑन अ केस टू केस बेसिस, और जो ऑक्सिलरी इनकम है वो वी गाइड ऑल द फ्रेंचाइजीज। जितनी हमने कॉल शेड्यूल करी हुई है, हमने सभी को क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि ये एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। इफ नॉट एनीथिंग एल्स, यू कैन कवर योर रेंटल्स एंड सैलरीज कॉस्ट। बाकी जो एक्चुअल में बिजनेस आ रहा है वो आपका कहना चोखा जो प्रॉफिट आ रहा है वो अलग से निकल के आएगा।
Thank you very much. Thank you, Sandeep ji. Thank Very you. helpful. Thank you very much for your Yes, sir. time for this show today. I think now we'll be having a lot of one-on-one discussions. मुझे Sure. लगता है इसके बाद सारे हमारे जो पार्टनर्स है वो आपके साथ वन-on-one डिस्कशन पे मुझे लगता है Sure. सारी डिटेलिंग करके जो राइट एप्लीकेशन जी है हाँ। जो लॉट ऑफ क्वेरीज है उनको और फर्दर गाइड कर सकते हैं हम सो Thank you. दैट एक राइट मैच मेकिंग हो जाए आपका जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच Sure. थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू Stanley, over to you. So with this, I would now like to invite the next brand of the evening, which is Bombay Sultani, and would request Mr. Akshay from the brand itself to please showcase the wonderful opportunity that he has for all of us. But before I hand over to Akshay, I would request him to please keep the presentation short and crisp within the limit of 12 to 14 minutes so that we can take up the relevant questions on time. Thank you, and over to you, Akshay. Thank you. Welcome, Akshay. Welcome. Good evening to everyone. I'll make sure my presentation is as short and crisp, and I will just share my screen. Sorry, I'm facing a little issue sharing the screen. Stanley, do you have my presentation in backup? Could you share it if possible? I'm not able to share my screen somehow. I don't know. So I'll guide you how you can share your screen if you want me to. So what you can do is you can minimize Zoom and open the presentation first. Okay, I'll do that. Is your presentation open on your computer screen? Not yet. No, it's not opening somehow. Stanley, do you have the presentation? I'll get it done. Just give me one quick moment. In the meantime, you can start and I'll come in. Okay. Good evening, everyone. I'm Akshay, and I'm here on behalf of Bombay Sultani Biryani House. ये जो brand है, I started this brand in 2015. We started at one location, and it's been now 5-6 years. We've been franchising 3 साल से, but we believe in going slow but going steady. And आज जो भी है with COVID, non-COVID, tough times, none of our outlets have shut down. सारे हमारे outlets are on and open and are continuing to do good business. We are basically a biryani brand. जो हमारी खासियत है कि we are a very value for money brand. We make sure that a customer gets 150 rupees के अंदर उनको बिरयानी, एक starter और एक cold drink मिल जाता है. The efficiency of our food, it is dispatched. It's a quick service concept. खाना जो dispatch होता है वो करीब 5 से 10 मिनट के अंदर dispatch होता है. So overall, the customer has a very value for money feel. Plus उनको खाना जल्दी से मिल जाता है. And I think that is by far one of the most prominent recipes of success for any quick service restaurant or a takeaway kitchen. सो हमारे जो मॉडल हैं, वी आर नॉट इन अ डाइन इन कैपेसिटी. हमारा सिर्फ टेक अवे कॉन्सेप्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लाउड किचन. सो दीज आर द टू मॉडल्स दैट वी वर्क इन. जो हमारा टेक अवे मॉडल है, वी आर प्रेजेंट ऑन द मेन रोड. इट हैज़ टू बी अ हाई फुटफॉल एरिया. It has to be an area where there is a good amount of movement, और जहाँ पे people can come into the counter, take a biryani and move out. So area has to be high footfall, high definition area where visibility is there. चाहे rental थोड़ा ज़्यादा हो, but that takes care of our marketing or our advertising or the face off that we need to maintain. और हमारा जो dependence रहता है on Zomato, Swiggy और online players में, it is quite divided. So we are not just dependent only on online aggregators. Again, हमारा Bombay Sultani, what makes you franchise with us? Well, the main thing is कि delivery kitchen खोलना या takeaway kitchen खोलना तो बहुत आसान है.
बट जो मेन इसमें मेहनत और जो स्किल लगता है वो चलाने में लगता है। बिकॉज रेस्टोरेंट खोलना तो आपको इट्स वेरी इजी, बट जो मेन उसको सस्टेन करना है month on month, how to make sure your sales increase, how to make sure your staff is there, how to make sure your taste remains consistent, how to make sure your food costing does not go beyond a certain point, how to make sure that wastage nahi ho aapka. So there are a lot of factors in the operations part, which a lot of people don't think of, but that only comes with experience, which I have got since the last 8 years being in the food industry. While coming to setting up also, जो setup का रहता है, it is not कि ये location अच्छी है तो we'll set it up. बहुत सारे factors और बहुत सारे figures हैं जो matter करते हैं उसमें, choosing the right location, being at the right spot, so you can cover the left side, the right side, the front side and the back side of a good residential complex जहाँ पे footfall अच्छा हो, जहाँ पे demand अच्छा हो. So multiple factors, as I said, plus the place has to be compliant as per the FSI standards, plus the place में ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए. कोई जगह ले ले हम लोग, फिर उसमें क्या होता है बाद में बहुत खर्चे निकलते रहते हैं ongoing operation wise. So all that is the expertise that जो हम लाते हैं on the table. Stanley, any luck with the presentation? Yeah, Akshay. Due to some technical issue, I need just 1 minute more. No problem. Okay. Yeah. So there are a lot of factors, as I said, setup outlet को setup करने में और outlet को चलाने में. और देखो kitchens तो बहुत सारे हैं. Why do you take a franchisee of a biryani brand? Well, biryani has been the most ordered cuisine during the last lockdown and this current lockdown as well. These are the stats which I think the online players have shared over their social media. So taking a franchisee, इसमें क्या है, COVID हो नहीं हो, business is great all seasons. We are not in a business where we get affected by lockdowns. Yes, slight effect होता है in terms of the walk-ins, but they all compensate in terms of home deliveries. A lot of people जिनके घर में खाना नहीं बनता है रोज, they're dependent on domestic help for खाना बनाने के लिए, तो they are the people who order from out. Bachelors हो गए, जो working couples हो गए हैं, and they are prominent in a city like Mumbai or any other metro city. So these are a lot of factors. Why do we take a franchisee? Because we are protected amongst all these errors that may make or may break our business. Uh, I have seen it myself. When I started out, I did not know A, B, and C. तो मुझे जो टाइम लगा सीखने में, हर चीज जानने में, and we have been running our outlet since the last 8 to 9 years now, and smooth चल रहे हैं. So it is our experience, it is the expertise that we get in, the hand holding that we do. It is a lot more than just telling you ये जगह अच्छी है, ये setup कर लो, staff दे दिया. नहीं, we train the staff, the manpower at our own outlet. Once they are trained, they are sent to your outlet to make the food. कभी भी वो कभी छोड़ के जाएं, we give you a free replacement. आपको वो headache नहीं है operations का. All you have to do is just be at the outlet for a couple of hours and supervise, like as if you are the third umpire. आपको बस वही करना है. जो ग्रेवीज हैं, बिरयानी के जो मसाले रहते हैं, दैट कम्स फ्रॉम आवर सेंट्रल किचन in an ambient form and in a frozen form. So all, and उसकी shelf life रहती है करीब 9 to 12 months तक, depending on product to product. So आपको क्या है, टेस्ट का इशू नहीं रहेगा, आपको कॉस्टिंग का इशू नहीं रहेगा, रेसिपी मैनेजमेंट का इशू नहीं रहेगा, आपको ये इशू नहीं रहेगा कि आई हैव टू बी इन द किचन. नो, आपको ये इशू वेस्टेज का, अकाउंटेबिलिटी का इशू नहीं रहेगा. बिकॉज जो भी ग्रेवीज आ रही है in the software, you will get to know, if I have got 1 kilo gravy and 1 kilo masala, I can remove so many biryanis or so many curries from it. The software gives you exact data. The software is something which we have invested a lot of time and money and energy on to develop it, to give us and to make our lives easier as business owners. Coming to the financials, we are not. Wait, flight to move on. Sorry. Yeah.
Presentation is there? Yeah. Can you see it on the screen? I don't know. My screen is actually got minimized, so I am not able to see it. Yeah, we can see the screen. We can see your presentation is already there. Okay. Okay. So, yeah. Can take us through. Could we go to the first page? Yeah. Yeah. So you can begin, Stanley. We can go to the next page. Well, again, जैसे मैंने कहा कि we founded the biryani house 2015 में. I have 9 years experience till date, and apart from this, I'm also associated with a lot of other initiatives in the food business. And so it's not कि हम कोई fly by night operator हैं और हम बस 2 साल पहले आए हैं. हम लोग काफी टाइम से हैं, and after that we decided to franchise it further rather than opening our own outlets. Next slide, please. हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ. So जैसे कि मैंने कहा, our USP is that a biryani start at 89. We are a very value for money brand. We believe in giving the customer the right quality at the right price, and we believe in doing volume business. So 89 ऐसा है कि once you keep 89 on a busy location you are, आपके दिन के 150 to 200 biryanis, they easily go on a good day, which is easily itself about 15 to 20,000 rupees का business. इसमें margin, yes, in this product the margin is a little lesser compared to other products, but then all the major brands, उनका एक hook होता है entry का. जैसे McDonald's started with the 20 rupee आलू टिक्की burger. तो एक वो product हमेशा रखना चाहिए where the people can come and try your food, और उनको दर्द नहीं है, उनको चुभना नहीं चाहिए कि ये 240 rupees की बिरयानी लूंगा, सही होगी नहीं होगी. 89 का risk we don't mind giving them, and as long as it works for us, why not? Next slide, please. As I said, जो हमारा मेन्यू इंजीनियरिंग है, ये काफ़ी रिसर्च के बाद हमने किया है. ये सिंगल पोर्शन का आइडिया, जैसे कि अगर आप कोई दूसरे रेस्टोरेंट से मंगाएंगे खाना, इंडियन कुजीन स्पेशली, तो उसमें क्या होता है कि आपको बिरयानी मंगानी पड़ती है और वो एक बिरयानी 2 लोग खा पाते हैं. तो किसी को अगर चिकन खाना है, किसी को अगर वेज खाना है, तो आप यूर स्टक. चिकन वाले को वेज खाना पड़ेगा टू मेक श्योर कि वो बिरयानी वेस्ट नहीं हो, या आप 2 मंगाओगे तो आपका बिल ज़्यादा होगा और क्वांटिटी वेस्ट जाएगी. So that is why we have got into this single portion thing. अगर मुझे चिकन खाना है, किसी को चिकन सीख खाना है, किसी को चिकन टिक्का बिरयानी खानी है, everyone can have it as per their wish. You don't need to be bowed down कि इसको ये खाना है तो 2 लोग का ही खाना आएगा तो हम कैसे डिवाइड करेंगे. Yeah, that's why I believe in single portion. हमारे जो स्टार्टर्स भी हैं, सीख कबाब, we sell it by the piece. किसी को अगर फ्राइड खाना हो, किसी को बेक्ड खाना हो, किसी को पाव कीमा पाव खाना हो, you can all order everything by the piece. So that is our USP, and that is what our menu engineering lies in. Next slide, please. जो हमारे पार्टनर्स हैं, स्विगी, जोमेटो, डंजो, we use दावत का राइस है, तो all outlets get the same rice, same texture throughout the year. We have our beverage partners where we get the refrigerations, and we get other products of theirs at a little better price from them. Next slide, please. So जो हमारे अभी outlets हैं, we are basically in 4. मुंबई में है outlets. We have 5 outlets in Mumbai. We have Thane में, Goa, and we have a big outlet in Patna which is opening in the next 10 days. Next slide, please. So again, जैसे मैंने कहा कि why Bombay Sultani Biryani House, क्या है खासियत? Well, next slide में आपको खासियत पता चल जाएगी. जैसे कि मैंने कहा कि we help you identify, we help you select the right location as per the radius offline and online. Our product is the most value for money product in the segment where our biryani start at 89. हमारी जो मेन्यू इंजीनियरिंग है वो बहुत प्रिसाइज है. सिंगल पोर्शंस है, स्टार्टर्स बाय द पीस है, इट इज गुड फॉर वन. हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, इट इज बाय फार वेरी गुड फॉर द प्राइस दैट वी गिव इट इन. सो अगेन दैट इज अनदर यूएसपी. जो सपोर्ट रहता है हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स को, वी गिव कंप्लीट सपोर्ट, कंप्लीट हैंड होल्डिंग, चाहे छोटे से छोटा इशू हो या बड़े से बड़ा इशू हो, वी आर कंप्लीटली देयर फॉर दैट. नेक्स्ट जो हमारा मेन्यू मार्केट मिक्स है, वी सेट इट अप एज पर द लोकेशन आवर फ्रेंचाइज पार्टनर इज
opening the outlet, क्योंकि कई जगह पे कुछ प्रोडक्ट का डिमांड होता है, कई जगह पे कुछ प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होता है, कई जगह पे कुछ लोकल फ्लेवर डालना होता है. So that is what we completely do. You don't need to inform us, but we do our research and we place it in the menu. Next slide, please. आपको जो डॉक्यूमेंट्स और डॉकेट्स लगते हैं विच यू हैव टू ट्रैक इन एक्सेल ऑन द सॉफ्टवेयर, ताकि आपका बिजनेस रन्स वेरी स्मूथली. फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट यू हैव एवरीथिंग. नो हिडन चार्जेस, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, जो भी है वो सब ट्रांसपेरेंट है. आपको ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि यू हैव टू ओनली टेक फ्रॉम दिस वेंडर. आपको कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ये हमसे ही लेना है आपको. जहाँ तक कि ग्रेवी की बात रही, इट इज एट अ वेरी कम्पिटेंट प्राइस, ताकि आपका फूड कॉस्ट डज नॉट गो वेरी हाई. But it also gives you peace of mind, and it also makes sure कि आपका taste is consistent. Next slide, please. Again, जैसे कहा कि why delivery kitchen? आज सब तो वही कर रहे हैं, हम क्यों करें delivery kitchen? The next slide will explain that. जैसे कहा 100 डिलीवरी किचन है तो मैं क्यों करूं? वेल, जैसे कहा कि 100 डिलीवरी किचन है, बट वो कितने डिलीवरी किचन सर्वाइव करते हैं 6 से 8 महीने से ज़्यादा, वी डोंट नो. हम लोग ज़ोमैटो खोल के देखते हैं, इतने सारे किचन हैं, पर वो कितने नाम बदलते रहते हैं, कितने चेंज होते रहते हैं, कितने जाते हैं और कितने आते हैं, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. बट as I said, the most smarter and the most wiser ones only survive. The next slide explains that. Next slide, please. जैसे कहा, our royalty is at 1%. That's it. 1% of your net sales is the royalty you pay us. We give you complete manpower support. जो training रहती है staff की, that is being done by us. The hiring is done by us, so you don't have any burden. These gravies are supplied to ensure consistent taste. We also हम देते हैं multiple cloud kitchen brands. तो आपको थोड़ा extra support मिल जाए within the current framework of the franchise. Menu engineering as per area, value for money brand hai, and it's a very low investment model compared to the other options we have in the food space. Next slide. So now we'll come on to the financials of पैसे की बात करते हैं. So जो हमारा टेक अवे मॉडल है, ये हमारा एक आउटलेट है मुंबई में. दिस इज हाउ द आउटलेट लुक्स. इसमें जो आपको चाहिए है 200 स्क्वायर फीट मेन रोड पे जगह चाहिए है. अग्रीमेंट टर्म हमारा फ्रेंचाइज का रहता है 5 साल. ROI जो आपका आता है रियलिस्टिकली बोले तो, रियलिस्टिक ROI विद इन 12 to 18 months on the higher side. I don't want to say 6 months and 2 months and 8 months and 1 year. 12 to 18 months आप realistically पकड़ के चलो to get your return on investment. Next slide, please. So our franchisee fee is 2,50,000 rupees. Outlet setup and support fee is 3 lakh rupees. Kitchen equipment is approximately 3 lakh rupees. White goods जो लगते हैं, it's about 1 lakh. The decor, civil work, electricals 2 lakhs है, पर ये subjective है. आपकी जगह में कितना काम है, अगर काम नहीं है तो आपका हाफ रेट में भी हो जाता है. Licensing and legal करीब करीब 20,000 रुपए. Refundable deposit with the brand ये रहता है because the base gravies are supplied by us. So just for the safety, we take a refundable deposit from our franchise partners of a mere 30,000 rupees. एक miscellaneous expenses आप पकड़ लो 99,000 rupees, जो शायद लगे नहीं लगे, अगर we have a place without a broker, वो पैसा सब बच जाता है. The total investment is about 12,99,000 में आपका पूरा आउटलेट अप एंड रनिंग हो जाता है. अगेन दिस आर फिगर्स, जो होगा एज पर एक्चुअल होगा. अगर आपका कहीं पैसे बच जाते हैं, सेकेंड हैंड इक्विपमेंट आ जाता है, या अगर हमको कोई जगह मिल जाती है विद द इक्विपमेंट्स, तो वो पूरा अमाउंट माइनस हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. This is the cloud kitchen model. This is again a smaller model. Again, 150 square feet. यहाँ पे we concentrate on more of online and just a small showcasing counter on the main road. Same agreement terms and same ROI. Next slide, please. Again, franchisee fee इसमें कम है, 2 lakhs है. Outlet setup and support fees is 2 lakhs. Kitchen equipments remain the same. White goods is the same. डेकोर, सिविल वर्क और इलेक्ट्रिकल का जो खर्चा है वो ना के बराबर होता है, बिकॉज वी जस्ट ओपन अ स्मॉल होल इन द वॉल काइंड ऑफ अ स्पेस, जो बाकी पीछे बैक एंड पे रहता है. लाइसेंस एंड लीगल करीब करीब 20,000. रिफंडेबल डिपॉजिट इज अबाउट 30,000 सेम विद द ब्रांड. एंड मिसलेनियस इज अबाउट 49,000 रुपीज. अगेन लगा तो लगा, नहीं लगा तो जो भी होता है, इसमें सारे खर्चे हैं, देयर एज पर एक्चुअल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. And that's it. So in case anyone wants to get in touch, or can get in touch with the Franchise India team,
They have a brilliant team and they are very proactive and very reachable. So kuch bhi doubts ho, you all are free to ask the questions or any details to Franchiseindia team. Thank you, Akshay. A wonderful opportunity that you have showcased to all of us. So we can take a few questions from the partners, to those who have joined us today. So over to you, partners. Gagan ji, Rajesh ji, Sandeep ji, Rahul ji. If you have any question, please. Hello. Hello, Akshay ji. Hello. Thank you for your presentation. Like, what do you expect about the rental should be for takeaway? So it depends city to city. जैसे अगर आप बात करें मुंबई की, मुंबई द रेंटल्स आर ज़्यादा ही होते हैं, तो बट वी डोंट क्रॉस मोर देन 40,000 रुपीज फॉर रेंटल. एक्चुअली मेन रेंटल्स के ऊपर काफी रहता है. और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आउटलेट सेटअप और सपोर्ट फीस जो 2,50,000 उसमें क्या रहेगा? ओके, सो जो आउटलेट की सेटअप और सपोर्ट फीस है, उसका जो मैं आपको एक ब्रॉड ब्रेकअप दे देता हूँ. वन इज द बिलिंग सॉफ्टवेयर जो इसमें आता है. सेकेंड इज आप यू गेट अ सेल्फ ऑर्डरिंग वेबसाइट एंड एन ऐप, जिसमें आपको कस्टमर्स को यू कैन गिव इट विद इन योर फ्रेंड सर्कल एंड दे कैन ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम योर वेबसाइट एंड ऐप ऑफ यू कनेक्टेड टू योर स्टोर. थर्ड इज आपको इसमें स्टाफ हायरिंग, मैन पावर, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डॉकेट्स, you get complete support. You have one dedicated person for 5 years. कभी आपको कुछ issue हो, any trouble you are having, you have one dedicated person. इसका आपको कुछ monthly cost कुछ नहीं देना है. It is a one-time cost and you have one dedicated person there with you who's in charge. कभी आपको कुछ भी issue हो, कुछ समझ में नहीं आए, कुछ accounting issue हो, we have a CA on board. आपको कुछ कभी marketing collateral चाहिए हो, we are there. कभी आपको कुछ नया menu बनाना हो, we are there. So there's no extra charge which you have to pay every month. It's just a one-time cost and you are sorted for 5 years. अगर आप इस cost को divide करें by 5 years, it hardly comes to about couple of thousand rupees a month. और कोई पर्सन जैसे टेक अवे जो खोल रहा है, लाइक वो भी ऑनलाइन लिस्टिंग अपनी करेगा स्विगी जोमेटो पे, वो भी ऑनलाइन लिस्टिंग करेगा? वो एक्चुअली लिस्टिंग हम कराते हैं because we have so many outlets, so we get a little better rate of commission or the advantage over a normal person, so we pass on that to our partners. So we get all the listing, everything done for our partners. So there will be a limitation for the area also, like कि जो डिलीवरी होगी वो 5 to 10 किलोमीटर के बिटवीन करेगा बंदा, या 6 kilometers का रेडियस गैप होता है, and 6 kilometers is 6 kilometers north, south, east and west. So totally 24 kilometers का आपको एरिया मिल जाता है. थैंक यू. अक्षय जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों का एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन सेटअप है, तो उस केस में आपके फाइनेंशियल्स क्या होंगे? क्या कुछ कॉस्ट में कोई वेरिएशंस रहेंगे? कैसे करेंगे उस चीज को? ओके, एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन. तो अगर किसी का ऑलरेडी आउटलेट रनिंग है, उसके पास सारा सामान है, तो ही ओनली हैज टू बेसिकली टेक आवर फ्रेंचाइजी, पे द फ्रेंचाइजी फी एंड आवर आउटलेट सेटअप एंड सपोर्ट चार्ज जो है. उसमें we also have our own cloud kitchen brands. We have 6 cloud kitchen brands. One is in the dessert space, one is in the curries, one is in a paratha space, one is milkshakes, and one is more of an American fast food cuisine. So we also have 6 brands which we pass on to our partners. इसके अलावा अगर कुछ मशीन या कुछ इक्विपमेंट लगे जिसकी एकदम अर्जेंट ज़रूरत है, तो that will have to be purchased. अगर हमारे पास कहीं हमारे आउटलेट पे कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है, we'll be more than happy to give it and pass it on to our franchise partner. Okay, thank you. Well, thank you so much, Akshay, for joining in today. I'm sure the kind of opportunity that you have showcased to us, the investors who have joined will definitely come up with more questions. So for that, we will definitely connect one-on-one with you over the phone. Great. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you. Pleasure. With this, I would now like to invite the next brand of the evening, which is Plugel, and would request Mr. Sumit from the brand to please showcase the wonderful opportunity that he has for all of us. So over to you, Sumit. But before I hand it over to you, just a gentle reminder to keep your presentation short and crisp within 10 to 12 minutes so that we can take up the relevant questions post your presentation. Over to you. So thanks a lot, Stanley, and welcome all for giving us the opportunity to speak about our brand. So let's get started directly with the presentation. I hope everyone can see the screen. Yeah, it is visible. Please go on. So basically, Bharat Technologies is a brand who is into creating a 360-degree ecosystem for all gamers and developers.
by giving the opportunity to get hold of the equipments and accessories at a very reasonable price, and basically at a on rent basically. So we are giving the franchisees, through which they can earn rent के through वो basically कमा सकते हैं. So अगर हम बताएं, Plugal is basically an online electronic rental store, uh, where Plugal is creating a platform who is managing the future technology, gaming products and equipments, which is completely affordable to masses. These are the products which we actually deal in with, and these are the ways they can use our products and the way they can place their orders. So we have gaming PCs, we have office laptops and office PCs. We have PS4s, PS5s, steering wheel, Xboxes, and VRs. We have even TVs, like television equipments also with us, which we have not placed over here, but we do have that also. If we speak about, why are we best at what we do, is because we give up approximately 66% ROI per annum. We have a customer referral rate of 79% and retention rate is 68%. We have a verified, renters with complete KYC. We give products only to those who have a, complete KYC done with us. Only then we provide them our instrument, or else we don't. We are the one who will be responsible to give you the sales. So we will be bringing you the sales. You do not have to worry about the sales as well. And we are the number one brand in gaming rental sector, rather, because we are the only brand we are the first brand who have started this logic in the market. And if we speak like why should you work with us, we give you a minimum guarantee of 3% monthly on the stock investment. We give you a break even within 45 days from the onboarding. We have set up a proprietary chipset and GPS installation, which is done in all our PlayStations and all our equipments which we provide to you, through which you can keep a track of everything. So basically, if we sum this up, you just have to sit back and there is no workload for you. It's all our responsibility, our things which we helping you out with. We have the best product security and insurance agreements, is because we have a recovery team as well. एक recovery team हमारी रहती है जो इस पे work करती है, और कोई भी दिक्कत हमारे franchisees को आती है तो उनकी responsibility रहती है कि वो उसको recover करके लेके आए. तो वो टेंशन भी आपकी नहीं रहती है, वो हमारी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं. Now if we talk about our marketing endeavors, हमने प्लूगल की लोकल टीम हम ऑल ओवर इंडिया हम परचेज करते रहते हैं, जिसमें हम अपने फ्रेंचाइजीज को प्रमोट करते हैं. वी प्रमोट आवर ब्रांड थ्रू होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. हमारी ये सब के थ्रू भी प्रमोशंस होती है. हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं इन schools and colleges. We run ads and commercial ads like in IPL, ISL and other leagues as well. We do esports events and online gaming tournaments as well. हमारी esports events and tournaments भी चलती रहती है, जिसमें हम अपने आप को प्रमोट भी करते हैं, लोगों को गिफ्ट भी देते हैं once they win the tournament. We organize sports events as well through on national level as well, sometimes on national level, but generally in regional level as well. We run a thorough ad in all social medias like Instagram, Facebook, YouTube, Google and everything. We have a 24/7 hotline number, जहाँ पे आप कभी भी कोई भी फ्रेंचाइजी को भी दिक्कत आते हैं तो उनके लिए भी एक नंबर रहती है, एंड कस्टमर्स के लिए ऑफ कोर्स रहती है. हमारी वेटिंग लिस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया है अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस ऑब्वियसली. हमारी थॉरो SEO भी रन होती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में हमारी ये सारी काम चलते रहते हैं इसमें एवरी डे. We have a daily platform visit of approximately 2,000 customers जो हमारे वेबसाइट को हर रोज विजिट करते हैं. We keep on running OTT ads in Hotstar. Like कोई भी अगर स्पोर्ट्स की मूवीज होती है तो उसमें हमारे एड रन होते हैं यूट्यूब में, हॉटस्टार में, प्राइम वीडियोस में, एवरीवेयर ऑन दैट सॉर्ट. So if we speak about the Plugal brand and its group, Plugal is one of the small baby of Varun Mittal group actually. So Varun Mittal is basically our managing director. He is the founder of this brand.
he has several other brands which is running under his group, like High Court, White Saffron. White Saffron is obviously the hospitality service. Shanti Plaza is also one of those. Delhi Six, Haldirams is a distributor brand which is under him. And here is the Flugel. Then we have Kaleva and Neutralite as well. And if we talk about our vision, so our vision is to provide a rental store, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें हमारे कस्टमर्स को, हमारे गेमर्स को, डेवलपर्स को इक्विपमेंट्स जो होती है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो होती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाती है. वी वांट टू क्रिएट एन एडुटेक एंड अकेडमी सिस्टम जिसमें लोगों को वैसी इंफॉर्मेशन मिल जाए, हर तरह की ज्ञान मिल जाए, जिसके थ्रू वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए. वी इवन हैव अ फंडिंग सिस्टम जहाँ पे हम गेमर्स को और डेवलपर्स को जो गेम और डेवलप करते हैं गेम्स को, हम उनको फंडिंग भी करते हैं. एंड वी हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, विच इज गूगल बूट कैंप. So if we speak about why rental business, it's very simple. अगर हम रेंटल बिजनेस में अगर जाते हैं तो फर्स्टली इसमें कोई भी तरह की टेंशन नहीं होती है. ये एक सॉर्ट ऑफ एसेट रहती है जो सिक्योर रहती है. आपको रेंट पे काम करना है और रेंटल जो सिस्टम होता है वो बेस्ट सिस्टम होता है, बिकॉज कोई भी एक संग में एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपेंस करके कुछ परचेज नहीं करना चाहेगा. वो चाहेगा कि हम यही सामान हम बहुत कम दाम में हम उसको यूज कर पाए. सो दैट्स द रीजन रेंटल प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट इन टुडेज इंडस्ट्री. एंड गेमिंग इंडस्ट्री हम सबको ही मालूम है अभी बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहा है. वी हैव अप्रोक्सीमेटली फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ $90 billion, रादर $250 billion की हमारी प्लेटफॉर्म इंडियन इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री बनने वाली है इन फ्यूचर. And if we talk about the targeted market, we have approximately 20 franchisees which is running right now in all India. And हम अभी हमारे पास में अभी दिल्ली की इतने सारे कस्टमर्स इन वेटिंग लिस्ट है कि हम अभी दिल्ली में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे फ्रेंचाइजी. हरियाणा ऑफ कोर्स, नोएडा में हमारे पास में अभी फ्रेंचाइजी है, बट वी कैन टेक इनटू कंसिडरेशन. And immediate targets हैं हमारे मुंबई में. We want to tap in Mumbai is because we have approximately 2564 customers in only Mumbai, which is the highest among all cities. Now, if we talk about our finances, this is the finances जहाँ पे हमारे 3 मॉडल्स रन होते हैं, which is 12 lakh, 22 lakhs and 53 lakhs. We as मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, we give you a minimum guarantee of 3%. Franchisee fee is also very less. For small investment, it's like 1 lakh. For medium, it's 1.5, and for the large is 2.5 lakhs. Royalty is 20% for all. Central marketing fees is 3% for all. And average payback period, जैसे कि हमने बताया, for small is 18 months. This is the maximum time period which you take into consideration, and this is very realistic, which our franchisees already,